Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Management Junction. I'm Manoj Kumar and today we are going to discuss a very interesting topic which is new product development. So as from the name I think the things are clear to you that whenever a company are thinking to launch a new product, to create a new product, they are having something new ideas, new concept with them. So this is all we are going to talking about, that what is the process of making that new product, or what are the factors which influence those companies, right? So let's start without getting any delay. So when we talk about the introduction, so we can say that new product development is a crucial process that involves the conceptualization, design, creation, testing and introduction of new product or services into the market. यही है ना हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मीन्स हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है। पहले हम लैंडलाइन फ़ोन यूज़ करते थे। देन किसी के दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट आया कि अब हम एक मोबाइल बनाते हैं जिसको कि हम इधर उधर लेके जा सकते हैं। फिर उसका डिज़ाइन किस तरह से किया जाएगा, पहले कीपैड वाले मिलते थे आपको, देन क्रिएट किस तरह से हुआ, फिर उसकी टेस्टिंग की कि या वो सक्सेसफुल है या नहीं है, राइट। देन द सेकेंड थिंग इज that why NPD is essential. It's essential for companies to remain competitive, to meet the customer needs, and also to drive that growth into the market, into that dynamic market, right? अब न्यू प्रोडक्ट क्यों कंपनीज बना रही हैं, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको एग्जांपल दिया था, लाइक सैमसंग था। सैमसंग ने अपना न्यू प्रोडक्ट लाइक मॉन्स्टर रेज क्यों लेके आया, क्योंकि उसमें ऑलरेडी शॉमी एंटर कर गया था मार्केट में, तो वो compete करना चाहते थे, वो कस्टमर्स की नीड को मीट करना चाहते थे कि उनको लेस बजट में अच्छे फीचर्स चाहिए थे, राइट। After that, moving toward to the next thing, that is the new product development process, or we can say the stages. So here the first thing is we have idea generation, after that idea screening, then third thing is concept development and testing, fourth thing is marketing strategy and business analysis, then product development, after that market testing, then the commercialization, or you can say the product launch, and last thing is post launch evaluation. So let's discuss these stages one by one. So first thing is idea generation. So नाम से क्या चीजें clear हुई है, means you want to generate some new ideas. This is a very first stage which involves generating a pool of creative ideas. So here what kind of sources are included into that? That can be from the customers, from the employees, by conducting a market research, और जो latest industry के trend चल रहे हैं उसके according आप भी कोई idea generate करना चाहते हो, और इसके लिए आप किस तरह की techniques को use कर सकते हो. You can use brainstorming, or you can use the idea contest to encourage those diverse thinking, right? After that, here we have considered the example of Apple. So Apple iPhone क्या था, was a revolutionary idea that combined a phone, उसमें music player था, internet browser था, into a single device, which was driven by the vision of Steve Jobs, right? So वो idea generation था कि हम क्या revolutionary लेके आ सकते हैं market में. Now maybe with the help of customers, from the employees, from the markets, you are now able to collect some kind of ideas जो कि आपके लिए working as a alternatives. Then the second stage is idea screening. Means now we are having so many alternatives, we have to pick the best one according to different factors. So in this stage those ideas are evaluated based on the various factors like your feasibility. After that, that should be aligned with the company goals, then the market potential and profitability. आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, अपना प्रॉफिट भी तो वहां पे देखोगे ही देखोगे, एंड जो इन चीजों के साथ मैच कर गया आप उस आइडिया को पिक करोगे, और जो नहीं हो रहे हैं उसको आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू एलिमिनेट दोज अनसुटेबल आइडियाज, बिकॉज कोई ना कोई रीजन रहा जिस वजह से वो आपके मे बी फिजिबिलिटी में नहीं आ रहा था, वो आपके गोल्स के साथ मैच नहीं कर रहा था, या उसमें आपको प्रॉफिट नहीं दिख रहा था. हियर वी हैव कंसीडर्ड एग्जांपल ऑफ कोका कोला. सो कोका कोला का आइडिया था टू लॉन्च ए न्यू कोक which was screened, and later उन्होंने जब retrace किया उसको due to negative customer feedback, that demonstrate the importance of evaluating the idea before implementation. So कभी भी अगर आपके पास कोई idea आता है, डायरेक्ट उसकी implementation पे मत जाओ, पहले you have to screen them, then you have to pick the best one according to your different objectives. After that, the third stage is concept development and टेस्टिंग. अब हमने आइडिया जनरेट किया था, वहां से हमने स्क्रीन कर लिया
जो भी हमें बेस्ट लग रहा है, अब हमने उसको डेवलप करना है और उसको टेस्ट करना है दैट जो हमने सोचा था क्या वो सच में सही है, ठीक है, या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है. So here the selected ideas are developed into the detailed concept, and these concepts are going to be present to your target customers. Why? For the feedback, or how you can do that with the help of surveys. Maybe you are going to consider some focus group or the prototypes. These are the various method to get the feedback from your target customers. Now why you are getting the feedback? You are getting the feedback to help or to refine your concepts and to identify those potential challenges. So here we have considered example of Tesla's Cybertruck. So unka concept was generating a significant buzz before its launch, and with that enthusiastic providing feedback, उस पे futuristic design के उनको feedback मिले, बहुत सारे feedback मिले, so वो उन्होंने वहाँ पे अपना concept को test करने की कोशिश की. After that, the next thing is marketing strategy, or we can say the business analysis. अब हमें पता लग गया कि हमारा आइडिया परफेक्ट है, वी आर गोइंग टू गो विद दैट पर्टिकुलर आइडिया, विद दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. So according to that we have to make some kind of marketing strategies. So for that, a thorough business analysis assesses your maybe the financial viability of product, एंड हियर यू हैव टू कंसीडर डिफरेंट फैक्टर्स लाइक कि उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितना आपको पड़ेगा, उसका फाइनल प्राइस क्या सेट करेंगे जिसमें कि आपका मार्जिन कितना रहेगा, राइट, एंड आप कितना रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो. सपोज यू आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर 10,000 यूनिट, सो उसका प्राइस किस तरह का रहेगा, अकॉर्डिंग टू दैट आपको रेवेन्यू कितना जनरेट करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो द गोल इज टू एंश्योर दैट द प्रोडक्ट should align with those company financial objectives. So here we have considered example of Nissan's when they were thinking for the launch of electronic vehicles. So what they done, prior to launching their electric vehicles, Nissan conducted a thorough business analysis to ensure कि जो उनका production cost रहेगा और जो pricing है, are they going to be aligned with those electronic vehicle market demand or not. जब उन्हें लगा कि ठीक है, then they go with that. After that, the next thing is product development. अब हमारी सब चीजें होगी, strategies बन गई हैं, we have developed, now going to develop. So design is finalized, the prototypes and the samples are created, and the different cross functional teams are going to collaborate on maybe the engineering, the design, the manufacturing, or the quality assurance of that particular product. Here we have considered example of Oculus Rift VR headset, virtual reality headset. So they involved into collaboration between the engineers, किस तरह का उसका design रहेगा, the programmers for the coding to create a high quality and immersive experience, right? So ये हमारा product development हो गया. वहाँ पे क्या है, जो जितने different teams हैं, उसमें कुछ इंजीनियर्स, बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं जो उसकी डिज़ाइनिंग पे, उसके हार्डवेयर पे काम करेंगे, जो हमारे बहुत अच्छे इंजीनियर्स ऐसे होंगे जिनकी कोडिंग बहुत अच्छी होगी, देन कुछ क्वालिटी एश्योरेंस को चेक करेंगे, सो दैट हम हर एक जो भी स्टैंडर्डाइज आईएसओ होगा या आईएसआई जो भी हॉलमार्क्स रहेंगे उन पे हम पूरा खरा उतर सकें. आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग इज मार्केट टेस्टिंग. अब क्या होता है कि कभी भी आप प्रोडक्ट को डायरेक्टली लॉन्च नहीं करते हो मार्केट में. बिफोर दैट व्हाट यू डू, you are going to introduce that product to a limited market segment to evaluate its performance in a real world setting. maybe आपने 15-20 कस्टमर्स, लॉयल कस्टमर्स हैं आपके या आपके एम्प्लॉयज हैं, उनमें आपने डिस्ट्रीब्यूट किया. so this step is going to identify any issue before a full launch, and they are going to gather the feedback for the further improvements. अगर उस टाइम पीरियड पे they suppose they are going to use that particular thing for 1 month, सो बिटवीन दैट पीरियड अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उनको बताएंगे, फिर वो उस पर काम करेंगे और उस तरह से उसको इम्प्रूव करेंगे. सो हियर वी हैव कंसीडर एग्जांपल ऑफ गूगल ग्लास. अब गूगल ग्लास वाज इनिशियली रिलीज टू सिलेक्ट, क्या कि उन्होंने एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ एक्सप्लोरर्स को वो किया मार्केट टेस्टिंग के लिए. अब उनसे क्या उनको पता चला, उनको उसका यूजेस पैटर्न पता चला, उसका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पता चला, और वहां से उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी चीजें पता चली. After that, the commercialization, or you can say now this is the stage where you have to launch your product. So जब मार्केट टेस्टिंग सक्सेसफुल हो गया तो प्रोडक्ट को अब हम लॉन्च करेंगे एक ब्रॉडर स्केल पे. सो डिफरेंट मार्केटिंग प्लान्स हम उसके लिए बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज हम यूज करेंगे उसके लिए, हम सेल्स एफर्ट किस तरह की इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ये सब चीजें उसमें डिसाइड करेंगे. हियर वी हैव कंसीडर्ड एग्जांपल ऑफ
Amazon Echo Smart Speakers। So जब वो सक्सेसफुली मूव हो गया था मार्केट टेस्टिंग से फुल कमर्शियलाइजेशन पे, तब उन्होंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग कैंपेन्स और स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग यूज करके उस पर्टिकुलर सेगमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। देन अब हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, हम यहीं पे नहीं रुकेंगे। इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस कट थ्रॉट कंपटीशन, you want to enjoy the margin, the market growth, market share, then there is one more step which is post launch evaluation। अब after the launch the product जो भी उसकी परफॉर्मेंस है क्लोजली मॉनिटर्ड, उसकी सेल कितनी हुई वो हमने चेक किया, कस्टमर्स का फीडबैक किस तरह से रहा, या हमारा मार्केट शेयर कितना हुआ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। ये सब चीज़ें हमें एनालाइज करनी है सो दैट if there is any kind of necessary adjustment are made, so that are going to be based on that actual market response। अगर हमने जो एक्सपेक्ट किया था उतनी सेल नहीं हुई तो हमें वो चेक करना पड़ेगा कि क्या रीजन रहे होंगे, मे बी फीचर्स में कुछ प्रॉब्लम रहा, मे बी प्राइस में कुछ प्रॉब्लम रहा। अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू adjust those things for the future reference। So this is the new product development process or stages। Now moving forward, that is your ओके, बिफोर दैट लेट मी गिव यू द एग्जांपल। अब जब हमने पोस्ट लॉन्च इवेल्युएशन का, यहाँ पे हमने कंसीडर किया है एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब वो क्या करते हैं, दे रेगुलरली अंडरगो द पोस्ट लॉन्च इवेल्युएशंस विद देयर अपडेट्स एंड जो भी उनके पैचेस रहते हैं बेस्ड ऑन द यूजर फीडबैक और किस तरह का उनका परफॉर्मेंस एनालिसिस रहा, उसके अकॉर्डिंग आप कभी भी चेक करते होंगे अपने विंडोज की, आपको सेटिंग्स आती रहती हैं, अपडेट सेटिंग आती रहती हैं, राइट। सो वो पोस्ट लॉन्च इवेल्युएशन है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब क्या क्या ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो कि आपके एनपीडी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो वी कैन से द फर्स्ट थिंग इज मार्केट नीड्स एंड ट्रेंड्स। ऑब्वियसली सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द अनमेट कस्टमर नीड्स। आपको उस पर अपडेट रहना है, स्टेइंग अपडेटेड ऑन द मार्केट ट्रेंड्स ड्राइव, उसके अकॉर्डिंग आप इनोवेशन करोगे अपने प्रोडक्ट में। जैसे हमने एग्जांपल लिया द इमर्जेंस ऑफ स्मार्टफोन। अब वो क्या था, दैट वाज ड्रिवन बाय द नीड ऑफ, अब लैंडलाइन क्या था, एक जगह पे फिक्स था, हम उसे उठा के लेके नहीं जा सकते थे, राइट। सो स्मार्टफोन वाज ड्रिवन बाय द नीड फॉर पोर्टेबल कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा चीजें क्या मिल रही थी, यू आर ऑफर्ड विद द इंटरनेट कनेक्टिविटी और द एंटरटेनमेंट ऑप्शंस। Then the second thing is competitive landscape। अब you have to understand the competitors offering, that is going to help you to develop your product with the unique value propositions। अब इसमें हमने एग्जांपल कंसीडर किया है नेटफ्लिक्स का। अब नेटफ्लिक्स क्या है, द लॉन्च ऑफ द नेटफ्लिक्स के उसका एक ओरिजिनल कंटेंट था दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नीड ऑफ डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम दोज ट्रेडिशनल केबल टीवी एंड अदर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। उन्होंने अब क्या किया, उन सब चीज़ों को हटा के एक अलग से एक प्लेटफॉर्म दे दिया जहाँ पे अगर हम बात करें नॉर्मल तो आपको वेट करना पड़ता था एपिसोड्स का, आपको बिंज वॉचिंग वहाँ पे मिल रही है, पूरा का पूरा सीजन एक साथ प्रोवाइड हो रहा है, राइट। सो ये सब चीज़ें होगी कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। देन द थर्ड थिंग इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब you have to be leveraged with the emerging technology so that you can lead to that breakthrough products। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल कंसीडर किया है फिटबिट वेरिएबल फिटनेस ट्रैकर्स, जैसे आपको अदर कंपनीज के भी मिल जाते हैं। They capitalize on the advancement in the sensors and the data analytics to offer the personalized health insights। जैसे आपको अगर हम कहें रेडमी के बैंड हो गए, आजकल जो भी स्मार्ट वॉचेस मिल रही हैं आपको, वो क्या है उन्होंने इतना एडवांस कर दिया उस चीज़ को कि आपकी हार्ट बीट उसमें ट्रैक हो रही है, आपका कितना कैलोरी बर्न्स हो गया, आपके कितने स्टेप्स हो गए हैं, रनिंग मोड में हो, वॉकिंग मोड में हो, कब आपको उठना है, कब आपको सोना है, हर एक चीज़ इज गोइंग टू बी tracked over there। Then after that the next thing is the resources and the expertise। So the availability of the skilled personnel, then the funding and the technology is going to impact your NPD process। जैसे कि SpaceX जो डेवलपमेंट ऑफ द फैल्कॉन हैवी रॉकेट था, उनकी क्या थी रिक्वायर्ड, उनको एक सिग्निफिकेंट इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज और एक फंडिंग की जरूरत थी सो दैट दे विल बी एबल टू क्रिएट अ रीयूजेबल हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल। अब जो व्हीकल को लॉन्च करने के लिए यूज होता था वो दोबारा यूज नहीं होता था, उन्होंने रीयूज के लिए उस पर बहुत सारा काम किया। Then the next thing is regulatory and the legal considerations। Means you have to comply with the industry regulations and intellectual property protection। जैसे कि मे बी आपका कॉपीराइट का प्रॉब्लम ना हो, उसमें ट्रेडमार्क का कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट।
So here we have considered example of pharmaceutical industry. So whenever the new drug they are going to develop और वो एक development process में होगा, so that involve a rigorous regulatory approval to ensure the safety and the efficacy. After that, the next thing is the challenges in the new product development. अब क्या क्या challenges हो सकते हैं जब हम नया product बना रहे हैं? So the first thing is uncertainty, because new product face the unpredictable market reaction and the potential technological challenges. अब यहाँ पे या तो आपका product survive कर जाएगा, बहुत अच्छी sale हो जाएगी, या second chance क्या है, ये सेकंड ऑप्शन क्या है कि अगर आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करते हो तो आप वहां पे बिल्कुल ही डाउन चले जाओगे. लाइक जो गूगल ने अटेम्प्ट किया था लॉन्चिंग द गूगल ग्लास, दे फेस द अनसर्टेनिटी ड्यू टू द प्राइवेसी कंसर्न एंड अनक्लियर सोशल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दोज वेयरिंग सच डिवाइसेस. आफ्टर दैट सेकंड फैक्टर क्या रहेगा, सेकंड चैलेंजेस क्या रहेंगे आपके, टाइम एंड कॉस्ट कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए. सो यू हैव टू मेक अ बैलेंस, that balance speed to the market with the quality and also the cost effectiveness. ये दोनों ही आपके लिए चैलेंज रहेंगे. जैसे कि कंपनीज ने सोचा कि वी आर गोइंग टू डेवलप द सेल्फ ड्राइविंग कार्स, सो वहां पे क्या क्या चैलेंजेस थे उनके लिए. एक तो दैट इज अ वेरी लेंथी डेवलपमेंट टाइमलाइन, उसके लिए बहुत ही हाई कॉस्ट एसोसिएटेड थी रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए एंड टेस्टिंग के लिए, एंड लास्ट में उसका प्राइस भी उतना ही हाई होना था जो कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है. देन द थर्ड थिंग इज risk management. So somehow you are going to do the investment in npd that doesn't guarantee the success, so you have to mitigate those risks and this is a very crucial process. जैसे कि एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया अपना आईफोन एक्स, that is going to be featured with the facial recognition technology, a risky move we can say, that require addressing the potential security or the vulnerabilities and the user concern. So ये कुछ challenges रहते हैं आपके new product development में. Okay, so with this we have completed today's topic. I hope the concept is clear to you. So I request you all to like my videos, to share my videos with your friends, with your relatives, with your classmates, and do subscribe to my YouTube channel. अगर आपने subscribe कर रखा है then please press that bell icon so that आप तक हर एक notification सबसे पहले पहुंचे. With this, I'm going to wrap up to the lecture. See you in the next video with the new topic. Till then, bye bye.